we can go back and we will talk about something called as a quick sort. So quick sort, it is there. मैंने जानबूझ के मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले एक्सप्लेन किया बिकॉज दैट गोज क्वाइट सिमिलर टू द क्विक सॉर्ट. जैसे हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं वैसे ही वहां पर भी डिवाइड कर रहे हैं. हमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. सो थिंग्स आर लाइक वेरी सिंपल. चलो, गोइंग अहेड, शुड वी स्टार्ट विथ क्विक सॉर्ट? गुड. So let us move on, talk about what is quick sort, probably the last sorting algorithm that we need to discuss. And good thing is that the quick sort is again quite simplified sorting algorithm. We will see how it goes. पहले हम लोग on paper करेंगे. You people also do it on paper once. Once you are comfortable, let me know, and then we will go ahead. We will implement it in the code, right? So what quicksort algorithm it says? The quicksort algorithm, the quicksort algorithm, let's say this is smaller than the merge sort algorithm. Why the name is quicksort? Because it is found to be the fastest sorting algorithm. It is found to be the fastest sorting algorithm for the n number of elements. So as your number of elements are growing, people have seen that the quick sort does far better as compared to the other algorithms. And that is the reason, again, the quick sort is very popular algorithm. जो हम लोग arrays dot sort algorithm जावा में हम लोग arrays dot sort करते हैं. So your arrays dot sort is kind of internally again using a quick sort. मेनी ऑफ द लाइब्रेरीज, अगर आपने कभी सी प्रोग्रामिंग में काम किया होगा, सी प्रोग्रामिंग में क्यू सॉर्ट नाम का एक लाइब्रेरी फंक्शन है. तो बहुत सारे जगह पे जहां जहां पर लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जहां जहां पर रेडीमेड सॉर्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन मिलता है, सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन दैट पीपल प्रीफर हैविंग क्विक सॉर्ट इन प्लेस. एनीवे, तो सर, why it is called a quick sort? As I told you that quick sort is kind of a sorting algorithm which is very fast. But on a lighter note, I say that on a lighter note, I many times feel that quicksort is such an algorithm which you likely to forget quickly. मैंने ये देखा इस algorithm का स्पेशलिटी है. सो मर्ज सॉर्ट वैसे लेंदी algorithm है, लेंदी algorithm है, लेकिन वैसे याद रखने के लिए ज्यादा सिंपल है. यू टॉक लाइक अ क्विक सॉर्ट लोग पढ़ते हैं और लाइक अगले दिन पे भूल जाते हैं, अरे यार एग्जैक्टली क्विक सॉर्ट क्या था. आई से दैट मुझको बहुत बार ऐसे भी लगता है कि दिस लाइक अ क्विकली फॉरगेटेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सो पॉसिबिलिटी इज दैट. एनीवे, हम लोग आगे जाते हैं एंड वी विल ट्राई टू डू कि ये क्विक सॉर्ट में बेसिकली आइडिया क्या है. क्विक सॉर्ट का बेसिक आइडिया है ये है कि वी विल बी हैविंग वन ऑफ द एलिमेंट एज अ पिवोट एलिमेंट. यू कैन से पिवोट एलिमेंट और यू कैन से काइंड ऑफ अ रेफरेंस एलिमेंट. Once you find a pivot element, you need to find the elements greater than pivot. You should be finding an element greater than pivot. And other way around, from right side, you need to find the elements less than pivot. Once you find the element greater than pivot, once you find the element less than pivot, you need to swap them. You need to swap them and you continue the story. Again from left side, again from left side, again you start finding an element greater than pivot. Again from right side, again you try to find out number less than pivot, and again you found it, again you found it, again you swap them. Okay, and the story still continues. Again you keep finding an element greater than pivot and you keep finding an element probably less than pivot. The story continues till what? Until this left side marker and right side marker doesn't cross each other, doesn't cross each other. सो अगर हम लोग इसको आई कहते हैं, अगर मैं इसको आई कहता हूं, अगर मैं इसको जे कहता हूं, तो आई एम सेइंग दैट कि ये आई एंड जे जब तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए योर स्टोरी विल कीप ऑन रिपीटिंग. लेकिन मोमेंट दे आर क्रॉस्ड ईच अदर, मोमेंट दे आर क्रॉस्ड ईच अदर, द जेथ एलिमेंट जहां कहीं पर भी आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल योर जे इज समवेयर ओवर हियर. सो जहां कहीं पर भी आएगा वो एलिमेंट that will get swapped, that will get swapped with the pivot element, that will get swapped with the pivot element, and that completes your one pass, that completes your one pass. That's it, over. फिर से एक बार मैं एल्गोरिथम बताता हूँ, बाद में मैं आपको दो बार पेपर के ऊपर करके भी दिखाता हूँ, चिंता मत करो. कोड भी मैं आपके सामने ही टाइप करने वाला हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम. बट यू फर्स्ट ट्राई टू रिमेंबर. वैसे बहुत बड़ा एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन
मैंने कहा ना लोग भूल जाते हैं। तो पहला, you consider one of the element as a pivot element. From left side, find the element greater than pivot. From the right side, find the element less than pivot. Moment you find that, you swap these elements. You swap these elements. Again you continue. You swap these elements. So ऐसे आप लोग ग्रेटर स्मॉलर ढूंढते जाओ और उनको स्वैप करते जाओ। आप लोग नोट कर रहे हो, आप लोग ग्रेटर एलिमेंट ढूंढ रहे हो और स्मॉलर एलिमेंट ढूंढ रहे हो, ग्रेटर को राइट साइड पे डाल रहे हो, स्मॉलर को लेफ्ट साइड पे डाल रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी कि पीछे एल्गोरिदम में चल क्या रहा है। हम लोग ग्रेटर ढूंढ रहे हैं, उसको राइट साइड में डाल रहे हैं, और जो स्मॉलर ढूंढ रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में डाल रहे हैं। एंड दिस वे यू आर कंटिन्यूइंग जब तक आई और जे क्रॉस नहीं हो जाते। वंस दे आर क्रॉस्ड, जो पिवट एलिमेंट है, दैट यू आर ट्राइंग टू स्वैप इट विद दैट जेथ एलिमेंट, तो सर ये करके हम लोग अचीव क्या कर रहे हैं? हम लोग अचीव ये कर रहे हैं कि हम लोग पिवट से कंपेयर कर रहे थे। तो ऑल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन पिवट विल गो टू द राइट साइड, एंड ऑल द एलिमेंट लेस देन पिवट विल गो टू द लेफ्ट साइड. In other words, this element is reached to its final destination. This element has reached to its final destination. अब इसके आगे वाले सारे इससे ग्रेटर है, इसके पीछे वाले सारे इससे स्मॉलर है. It only means that this element as its final destination. अब इसको आगे जाके आपको वापस से कभी चेंज नहीं करना है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है. वो ऑलरेडी वो एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है. तो सर अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, अप्लाई क्विक सॉर्ट टू द लेफ्ट पार्टीशन एंड अप्लाई क्विक सॉर्ट टू द राइट पार्टीशन. That's it, and your sorting algorithm is completed. Apply quick sort to the left partition and apply quick sort to the right partition, and that's it. Your sorting algorithm is completed. It is that simple job. तो चलो, अभी आपको algorithm सुन के पता चल गया है, शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत. अभी हम लोग उसको पेपर के ऊपर करके देखते हैं. Let us make ourselves comfortable and then we will continue further, right? So I'm just starting with, and let me consider one of the element as a pivot element. Okay, so this element is a pivot element. Okay, from this, तो अभी के लिए pivot I'm considering leftmost element. और क्या क्या possibilities है, पहले मुझको algorithm खत्म करने दो, उसके बाद में theoretical discussion में बाद में बताऊंगा. Okay, now from left side, try to find out element greater than pivot. Is it greater than pivot? Not really. Is it greater than pivot? Yes. I found a number greater than pivot. From left side, I want to find out a number less than or equal to pivot. Okay. Is this number is less than or equal to pivot? Yes, I found that the last element itself is less than or equal to pivot. What is to be done? Nothing much. You swap you swap this element with this element. आपने नोट किया, स्मॉलर हम लोगों ने इस साइड में डाल दिया और ग्रेटर हम लोगों ने उस साइड में डाल दिया. And again you continue. Again you find a number greater than pivot. Is it greater than pivot? Not really. Is it greater than pivot? Not really. Is it greater than pivot? Yes, it is greater than pivot. This element is greater than pivot. You continue further. You try to find out a number less than pivot, less than or equal to pivot. Is it less than or equal to pivot? Not. Is it less than or equal to pivot? Not. Is it less than or equal to pivot? Yes, it is less than or equal to pivot. What do? You continue further and you sort this and then swap this. And again you continue the story. Again you want to find out an element which is greater than pivot. And I find that yes, 7 is greater than pivot. I want to find a number less than or equal to pivot. Is it less than or equal to pivot? No. Is it less than or equal to pivot? Yes, this is less than or equal to pivot. But at this moment, I found that I and j crossed each other. Now I is no more less than j. अगर I less than j होता है तो हम लोग स्वैप करते हैं, लेकिन यहाँ पर I less than j नहीं है. तो सर अब क्या करना है? अब क्या करना है? I need to swap that jth element with the pivot element. चलो jth element is to be swapped with the pivot element. So 2 comes over here and this element goes over here. This actually completed your one pass. And actually completed one pass, what I observed, all elements to the left of this are smaller than that. All elements to the right of this are greater than that. All element less than this are, smaller than this are to the left, and all elements greater than this are to the right. This completed your one pass. And if this completed your one pass, I'm saying that
apply quick sort to the left partition now. मतलब क्या, इसको pivot consider करो and follow the same technique, and then apply quick sort to the right side, इसको pivot consider करो and find the greater, find the smaller, and continue the same process. That's it. This is nothing but the quicksort algorithm. I hope the quicksort algorithm is cleared. Still, I'll repeat it once again. I'll repeat it once again, and now I request you, it will be good if you could do the paperwork with me. If you could do the paperwork with me, probably you will be in a better position. I'm just going ahead and finding out. Chalo. What is the first thing? Let us consider one of the element as a pivot. For my example, I'm considering the leftmost element as a pivot. If leftmost element is pivot, I want to find out a number greater than pivot. I want to find out a number greater than pivot. In other words, जब तक आपका एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू pivot रहेगा, तब तक आगे जाते जाओ. If this is less than equal to pivot, go ahead. This is less than equal to pivot, go ahead. Yes, this is something, a element greater than pivot. Okay, good. I want to find out a number which is less than or equal to pivot, and I find that, oh, this particular element is less than or equal to pivot. What is to be done? क्या करना है अभी? Yes, I need to swap 9 and 4. So 4 comes at the place, 9 goes at the place, and yes, you continue the story. Again you try to find a number greater than pivot. मतलब क्या है, जब तक less than or equal होगा तब तक आगे बढ़ते जाओ. If this is less than equal, आगे बढ़ो. ये less than or equal to the pivot, आगे बढ़ो. Less than equal to pivot नहीं है. In other words, I found a number which is greater than pivot. You continue further. I want to find out number लेस देन और इक्वल टू pivot. ये मुझको लेस देन और इक्वल टू pivot वाला नंबर ढूंढना है. मतलब जब तक ग्रेटर है तब तक पीछे जाते जाओ. Is it greater? Yes. Is this greater? Yes. Is this greater? Yes. This is greater, so I can simply say j minus minus. Okay, that is going good. What is to be done now with 8 and 2? Left side say I found a number greater than pivot. From the right side I found a number less than pivot. Go ahead and swap these two numbers. Shall I swap these two numbers, and you continue your story further? You continue your story further. You try to find out a number greater than pivot. You try to find out a number greater than pivot, and you try to find out a number less than pivot. Now, should I swap I and j? ith एलिमेंट और jth एलिमेंट को अभी स्वैप करना है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एट दिस टाइम i इज नॉट लेस देन j. अगर i लेस देन j होता है, लिसन, जब i लेस देन j होता है तभी हमको इस तरह का स्वैपिंग करना होता है. बट अगर i इज लेस देन j, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, प्रोबेबली अब मुझको लूप से बाहर आना है. मेरा पास खत्म हो चुका है, मुझको लूप से बाहर आना है, और अब मुझको क्या करना है? किसको स्वैप करना है? Yes, jth element I need to swap it with the pivot. So 2 goes over here and the pivot goes to its place. So jth element is swapped now with the pivot. And what we achieved? I told you all elements to the left of the pivot are smaller than that. All elements to the right of the pivot are greater than that. Now what is to be done? What is to be done? Just go ahead and go ahead and apply quick sort to the left partition. कोई मुझे बताएगा आपका लेफ्ट पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक है? टेक अ लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी आपका लेफ्ट पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक है? लेफ्ट पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक है? आई एम आस्किंग इंडेक्स वाइज. यस, सो इट इज 0 to j minus 1. So I can say that left to j minus 1, right? Left to j minus 1. And what about this? This one is j plus 1, j plus 1 to right. It is j plus 1 to right. So मेरा left partition है left to j minus 1 and right partition है j plus 1 to right. I hope that is clear. Is algorithm understood to everyone? Correct. Should we go and implement the algorithm? Good. So let us continue further. What we'll do is that I hope आप लोगों ने code sharing आपका चल रहा है और you are able to see the code. Basic quick sort का मैंने project बना के रखा हुआ है, even though it is empty. तो मैं quickly इसका पहले code लिखता हूँ, और code लिखने के बाद हम लोग वापस इसके ऊपर आएंगे and we will do the complete paperwork. Complete paperwork in the sense
टिल लास्ट एलिमेंट, मतलब रिकर्सिव कॉल कैसे होते हैं वो भी हम लोग करके देखेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। हमें कहाँ पर था? सो आई वांट टू राइट पब्लिक void quick sort, quick sort. Okay, and what you need? You need a left index and you need a right index, are quite similar to the merge sort. तो पहले इंग्लिश में लिखते हैं. What I need to do? Consider leftmost element, left element as pivot. Okay, consider the left element as a pivot. What is next step? What is next step? You continue further. You find that from left, from left, with I'm saying that I index, from left, find element greater greater than pivot, than pivot. Okay, and then not only that, you continue further from right side, from right side, jth index, find element less less than or or equal to the pivot. Yes, equal to the pivot. So we are following this. Rather, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Like 1 2, this is done. Then what do you need to do? If what is that? They are not crossed. If I is less than j, swap ith element with jth element, right? And then you continue further. I say that repeat steps 1 2 3 until I becomes greater or equal to j. करेक्ट? सो जब तक i इज लेस देन, और अदर में सीधा लिखता हूं टिल i इज लेस देन j. सो जब तक लेफ्ट साइड मार्कर इज स्मॉलर देन द राइट साइड मार्कर, you repeat the above steps. But after that, what is your next step? Now what is to be done? अरे इसके बाद में क्या करना है? Once that loop is completed, continue further. You want to swap jth element with pivot element, right? With jth element with the pivot element, again we have taken care. And after that apply quick sort to apply quick sort to left partition. और आपका लेफ्ट पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक है? You are saying that left to j minus 1, and you continue further, apply quick sort to the right partition. And your right partition is from j plus 1 to right. jth एलिमेंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है. बाय द वे, देन व्हाट शुड बी द टर्मिनेटिंग कंडीशन? What should be a terminating condition? What should be the base condition? If array has single element, or the array नहीं कहना चाहिए, partition. If partition has single element or invalid partition, just return. This is exactly same condition as of merge sort. Exactly same condition as of merge sort. Merge sort में मैंने आपको already explain किया था. And if you are understood, पहले हम लोगों ने algorithm on paper देखा है, हमने उसको इंग्लिश में लिखा है, and now it is time we can go ahead and write a code for that. Let us continue further. So from left, find element greater than pivot. So from left, how do you find element greater than pivot? Let us just continue further one by one. So we need I is equal to 0. Sit carefully. And I'm saying that j is equal to right, correct? ये हमें लेफ्ट से और राइट से ऐसे आगे जाना है, सो इट इज देयर. और जो हमारा पिवोट है, ए पिवोट कौन सा है? ए पिवोट इज नथिंग बट एरर ऑफ लेफ्ट, राइट? जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, फॉर दिस डेमो टू वर्क हम लोगों ने उसको पिवोट कंसिडर किया. सो फ्रॉम लेफ्ट आई वांट टू फाइंड द एलिमेंट ग्रेटर देन पिवोट. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? while while arr of I
pay attention, by here error of I is less than or equal to, while error of I is less than or equal to the pivot element is equal to pivot element, I can simply say I plus plus. Obviously जब ये condition false हो जाएगा, it will come out of the loop. और condition false कब होगा? When you find that the number is greater than pivot. I hope you got the point. The second step is the reverse of this. So here you want to find out an element which is less than or equal to pivot. Less than or equal to pivot. So you continue further. ARR of J is greater than ARR of left. Greater than ARR of left. You are saying J minus minus. वापिस से ये कंडीशन ट्रू कब हो जाएगा? ये कंडीशन फॉल्स कब हो जाएगा? When you find a number which is less than or equal to the pivot. That is second. I'm continuing further. If I is less than J, if I is less than J, you need to swap ith element with jth element. So how do you swap ith element with jth element? तो एक्चुअली ये 3 लाइन का कोड लिखना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. I'll just do one thing, just to keep it more readable. Just to keep it more readable, I'll prefer writing one special function just to swap the number of elements. Swap two elements. So I want to swap, let's say, x index with the y index. So how do you swap this? Oh, you know that temp is equal to error of x. Just to keep it more readable, error of x is equal to error of y, and error of y is equal to temp. All right, you continue further, and then you go ahead, you simply say swap. क्या किस किस को swap करना है? ith element I want to swap with jth element. Just as I said that I just want to make it more readable. Otherwise वो 3 लाइन का कोड मुझको यहाँ पर घुसेड़ना पड़ेगा और वो कोड अगली दिखेगा. I just want to keep it more readable. Okay, but you are saying that you want to repeat these steps. Okay, तो इसको एक बार नहीं लिखना है. आप कह रहे हो इस स्टेप को 1 2 3 को आपको बार बार लिखना है. अगर आपको बार बार लिखना है, कब तक लिखना है? While I is less than J, you want to keep repeating this. Okay, as you are saying this, we have repeated this until like I is less than J. You continue further. Now swap J element with the pivot. Let me continue. Leftmost element और let's say jth element with the pivot. A pivot मतलब leftmost element, तो हम लोग उसके साथ उसको swap कर रहे हैं. Okay, that is also done. You continue further and you apply quick sort to the left partition. Oh, how do I apply quick sort to the left partition? Look, go ahead and let us apply quick sort to the left partition. Simply make a call, recursive call to the quick sort. You pass array and left partition is left to j minus 1. Okay, that is good. And again, you apply quick sort to the right partition, which is j plus 1 to right. It is also done, and story is over. Only base condition is left. Let me just go back and handle the base condition. If if left is equal to right, it means that it is having a single element. If left is greater than right, then it is a invalid partition. So I'm simply saying that if left is greater than or equal to right, I do not want to continue further. I just want to say return. Done. So is it completed? Almost completed. Let us just check whether it is working or not. Let us just check whether it is working or not. And the array is somewhere like this. It is 2 3 4 1 5 7 8 6 6 9. Yes, I got the array, and I want to print display array. चलो print this array. Arrays dot to string. ऊपर के कोड में एक छोटा सा बग है अभी भी. I know that, but still I have just kept it there. क्या हुआ योगेश? अच्छा सॉरी. हाँ ये मैंने, या गॉट द पॉइंट. ये मैंने एक पहला पास होने के बाद वाला लिखा है एलिमेंट्स. मेरा ओरिजिनल एरे क्या था? 5 3 9 1 8 7
2, 6 and 4. Okay, now this is good. And then let me make a call to the quick sort at a place. Quick sort, and leftmost index is 0, rightmost index you understand that same as merge sort, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हम लोग, length -1, and check whether it is working or whether it is giving me any bug. Let me check, is it working? Oh yes, my array is in like a sorted order. I hope you got the point. It is working well. Obviously you can copy paste, obviously you can run it, but let me tell you that this code still has got a bug, still has got a bug. So sir, what is the bug there? To understand a bug, I want you people to do one little paperwork. One little paperwork. तो एक पेपर वर्क करो, मैं जो बता रहा हूँ आप खुद करो, एंड गो स्टेप बाय स्टेप, गो स्टेप बाय स्टेप. कोड आपको कोड शेयरिंग के ऊपर दिख रहा है. सो हैविंग कोड ऑन अ कोड शेयरिंग, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, रन कर लो, उसके बाद में चाहिए तो ट्राई करना. एंड यू सी दैट एट सर्टेन प्लेस दिस कोड इज गोइंग टू फेल, एंड आई वांट यू पीपल टू टेल मी at which place this code is going to fail. So suppose that I got an array like 4, 3, 2 and 1. If this is my array, if this is my array, now I want you people to tell me how this will work. Do the paperwork and let me know what went wrong. Repetition of any number, that will still work. जिब्रान वो आप करके देख सकते हो, अब एरे आपके पास है, जस्ट गो एंड चेंज सम नंबर्स, रन करके देखो, लेट मी नो इफ इट इज फेसिंग एनी इश्यूज. रिपीटिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसका पेपर वर्क करो एंड टेल मी, इज इट गेटिंग फेल्ड एनीवेयर, या कहीं पर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? पेपर वर्क मैंने कहा. प्लीज पार्टिसिपेट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर. बाद में मैं कोड में जाके चेंजेस करूंगा, चेंजेस उन लोगों को समझ में आएंगे जिन लोगों ने पेपर वर्क किया था. आई सेड एट वन पॉइंट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओनली पहले ही पास करना है आपको, पूरे पासेस नहीं करने के लिए मैंने बोले. डू इट ओनली वन पास. इन अ फर्स्ट पास इटसेल्फ इट शुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो व्हाट एरर्स विल बी देयर? इधर हम लोग डिसेंडिंग सॉर्ट नहीं कर रहे, हम लोग असेंडिंग सॉर्ट कर रहे हैं. मेरा क्वेश्चन है, आपको एरर कौन से लाइन पे आएगा और क्या लाइन आएगा? Yes, you people are saying that we are not able to find out a greater element. Okay, yes, you are not able to find out greater element, लेकिन error कहां पर आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है. Will it cause any error? Will it cause any error? And if it is causing any error, what is the error that it is causing? That is the question. Yes, Mayur, that you are right. That it is like an index out of bound exception आएगा. और वो क्यों आएगा? आपके पहले लूप में आ जाएगा. Please note that. Find a number greater than pivot. Find a number greater than pivot. Sorry. Find a number greater than pivot. Sorry. Find the number greater than pivot. Sorry. Find the number greater than pivot. Sorry. And find the greater number greater than pivot. Moment you reach to this particular point, this point will cause array index out of bound exception. जो आपका पहला ही लूप है जहां पर you are trying to find out a number greater than pivot, you will find that it will give you exception because आप लोग जो एलिमेंट चेक कर रहे हो वो array के बाहर का एलिमेंट चेक कर रहे हो. और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं होता है, प्लीज गो अहेड एंड पुट इट इनटू द कोड एंड यू क्रॉस चेक. Put it into the code and you cross check. Integer, let me create an array, and with the array like a 4, 3, 2, 1, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, even though it worked for some code doesn't mean that your code is perfect. And now you are able to see the exception, and you find that this exception is at the line number this, which is saying that at this line number 27, ये जो ith element आप लोग access कर रहे हो, this element is out of range. अरे is that clear? प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो सॉल्यूशन बताता हूं. इस प्रॉब्लम इज क्लियर? यस. एंड नाउ इफ यू अंडरस्टूड अ प्रॉब्लम, if you want to understand the problem, obviously in this particular case, listen carefully, in this particular case मुझको ith एलिमेंट कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. सार्थक,
दैट्स व्हाई से दैट प्लीज डू द पेपर वर्क एट योर साइड एज वेल. जब तक आप खुद से पेपर वर्क नहीं करते हो, इट विल बी लाइक वेरी टफ फॉर यू पीपल टू डाइजेस्ट कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूँ. इफ यू आर जस्ट ओनली लिसनिंग मोड, इट विल बी लाइक टफर जॉब फॉर यू. सो आई एम सेइंग दैट आई वांट टू, दिस इज अ pivot, this is a pivot, you find a number greater than pivot. Oh, this is a number greater than pivot? No. So you say I plus plus. Is it greater than pivot? No. I plus plus. Is it greater than pivot? No. I plus plus. Is it greater than pivot? No. I plus plus. And now you are saying I plus plus. So your I is at the index 4. Your I is at the index 4 and you are trying to compare this element with the pivot element. बट एरे में अगर आप लोग चौथा एलिमेंट एक्सेस करोगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू एक्सेप्शन, जो मुझको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है. मैंने विथ कोड आपको दिखाया है कि इंडेक्स 4 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ 4. ये आपको बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप यहाँ पर चौथा एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो जो एरे के बाहर का है. इज दैट क्लियर सार्थक? या नाउ वेट. तो अब मुझको क्या करना चाहिए? एक कॉमन सेंस है, मुझको जो भी चेकिंग करना है वो मुझको करंट पार्टीशन के अंदर करना है. एम आई करेक्ट? वैसे भी मुझको ये चौथा एलिमेंट चेक करने का कोई मतलब ही नहीं था. मुझको ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक चेक करना है? मुझको ज्यादा से ज्यादा ये थर्ड एलिमेंट तक ही चेक करना है. उसके आगे वाला चेक करना, दैट इज मीनिंगलेस. दैट इज मीनिंगलेस. करेक्ट? सो जो कुछ भी मैं पार्टीशन सॉर्ट कर रहा हूँ, आई नीड टू कन्फाइन माई सेल्फ into that particular partition itself, right? So I'm saying that, hey, this is nothing, this was nothing but my left, hey, this was nothing but the right. I hope you know this left, this is right. So instead of length minus 1, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, I can write it only right and I can check. Have a look at this. If I is less than or equal to right, if I is less than or equal to right, if the first condition is true, then and only then check for the second condition. If the first condition is true, then and only then you check for the second condition, which will ensure that this exception will never occur. Which will ensure that this exception will never occur. क्योंकि जैसे ही i प्लस प्लस होके राइट में चला जाएगा, i राइट तक जाएगा, उसके आगे जाएगा, लेकिन वो वाला एलिमेंट कंपेयर नहीं हो पाएगा. वो वाला एलिमेंट कंपेयर नहीं हो पाएगा that is in front of you. So you find that the I will become 4, but you are not comparing that element. And then you continue further. You want to find out a number less than pivot. And I immediately found a number less than pivot. But have you noted that in this particular case, your I and J, they are, a I and J, they are crossed each other. Since they have crossed each other, अब मुझको क्या करना चाहिए? I need to swap jth element with the pivot element. I need to swap jth element with the pivot element, and then I found that yes, this element reach to its final position. And then you apply it to the, then you can continue further and you can apply it to the left partition, apply it to the left partition, and then you can again think of applying it to the right partition. Right partition itself is invalid partition, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. You can focus only on to the left partition. This is nothing but now this code become perfect. So sir, do you want to say that now this code will work? Yes, this code will work, and you cross check, is it really working? Is it really working? Yes, it is absolutely working. You don't worry. Now this is a perfect code. Now this is a perfect code जो हम लोगों ने try कर लिया. तो it is working for this big array. It is working for that small array as well. और ये आपको समझ में आ चुका है. Good. आप लोगों ने copy paste कर लिया है. आप लोगों ने run कर लिया है. That I'm assuming. If not, I'll wait for one more minute. Let me know if it is working for you. And if it is working for you, then we can go ahead. तो हम लोग वापस से वो जो पूरा अल्गोरिदम का पूरा एक बार पेपर वर्क करेंगे. वी विल ट्राई टू मेक आवर सेल्फ कंफर्टेबल, एंड वंस इट इज कंफर्टेबल वी कैन क्विकली टॉक अबाउट इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनदर पॉसिबिलिटीज कि पिवट और क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल, एंड आफ्टर दैट we will wind up with the sorting algorithm and we'll move on to the new concept. That is good. Good. Now most of the people have done it. Let me go back and let me do the whole algorithm once again for you. मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन. मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन.
I'm just going ahead and what is the algorithm? Algorithm says that you consider the leftmost element, रुको जरा, leftmost element as a pivot. Okay, this element is a pivot. This element is a pivot. I want to find out a number which is greater than pivot. Find out a number which is greater than pivot. And from the left side, I want to find out a number which is less than pivot. All right, you continue. So find a number greater than pivot. I found a number greater than pivot. जिनको शौक है और नहीं समझ में आ रहा है, they should do it with me. So find a number greater than pivot. I want to find out a number less than pivot. Oh, I found a number less than pivot there itself. What is to be done? यहाँ पर क्या करना है? This element is to be swapped with this element. 9 and 4, they are swapped with each other, and then you continue further. Again, you try to find out a number greater than pivot. I guess this is not greater than pivot, but I found a number greater than pivot. Find out a number less than or equal to pivot. How do you find a number less than or equal to pivot? Okay, j minus minus, j minus minus. Yes, I found the number less than or equal to pivot. What is to be done? Go ahead, swap it once again. So you swap 2 with it. And again, you try to find out a number greater than pivot. You find a number greater than pivot. I found a number greater than pivot. You find a number less than pivot. I found a number less than pivot. But what is this? What is this? Oh, I understand that in this particular case, it is I and J crossed with each other. What is to be done? What is to be done? Swap Z element with the pivot. I have swapped Z element with the pivot. That's it. I done that. That is good. My pass one is completed. The pass one is completed. Now you want to apply quick sort to the, and now you want to apply the quick sort to the left partition and you want to apply quick sort to the right partition. If you have left partition, it is this much on which I want to apply the quick sort, and your right partition is this much for which again you want to apply the quick sort. I hope this is very clear कि हमको quick sort इसको apply करना है. Let us continue further. Give me a minute. Let me put a box for it. And I'm looking good. And then you again continue your process. You continue your process. What do you want to do? For left side, अब एक एक खत्म करते हैं. पहले left side खत्म करते हैं, बाद में right side में जाते हैं. So again, this is from left, this is from right. But from left, from right, I'm saying that you consider this as a pivot. You consider this as a pivot and try to find out a number greater than pivot. I found a number greater than pivot. I want to find out number less than or equal to pivot, and this number itself is less than or equal to pivot. What is to be done? Go ahead and to swap 3 with 1. So 1 comes over here, 3 goes over there. This is done. And then again you continue. You try to find out number greater than pivot. Again you want to find out a number less than pivot. I found a number less than pivot. Hey, what happened? What happened? I and J crossed each other. If I and J crossed each other, what is to be done? Go ahead and apply what is that? Swap this jth element with the pivot element. Swap jth element with the pivot element. This is done. And if you are done, now you find that 2 अपने position पे पहुंच गया. 2 अपने position पे पहुंच गया. All the elements smaller than that are to the left of that. All the elements greater than that are to the right of that. Okay, that is still good. And now again you go on, say that apply quick sort to the left partition and apply quick sort to the right partition. As you apply quick sort to the left partition, see it carefully. As you apply quick sort to the left partition, what I said, okay, only element 1 is there, nothing else is there. That is good. And then you want to apply quick sort to the right partition. For the right partition, again what I see is nothing but element 4 and 3. And then अब left partition की अगर बारी आती है, what will happen with this partition? What will happen with this partition? For this partition, I'm able to see that the left is equal to right, and if left is equal to right,
there is a single element, ये partition ये आगे जाएगा ही नहीं. I hope terminating condition is reached. So this part, left part is sorted. Now you go to the right part. Right part, what do you need to consider? A right part, I need to consider this element as a pivot, and you want to continue further. You want to continue further from left side, find a number greater than pivot. And I found that this is not greater than pivot, this is not greater than pivot. Again, you go there and you stop there. Just now, अभी जो मैंने 4 3 2 1 वाला condition दिखाया था, it is something like this. It is going beyond right, so it will not be compared. You go back, and then I have got a number less than pivot. I found a number less than pivot. But what is done in this case? What is done in this case? Oh, in this particular case, I find that this element is like swapped with z element. Pivot is swapped with z element. This is done. Oh, good. Now you apply quick sort to the left partition. You apply quick sort to the left partition and apply quick sort to the right partition. A left partition, इसका जो left partition है, उसके left partition में भी क्या बचा? वो left partition has got only one element. Left partition has got only one element. So you say that again, left is equal to right, the condition is false. By the way, what is the right partition? A right partition is j plus 1 to right. A j plus 1 matlab kya? A j plus 1 to right. J plus 1, it is at which index? J plus 1, it is at which index? आप लोग नोट किया होगा, this is 0 1 2 3, this is 0, this is okay 1 छोड़ दो, now this is 2 3 and 4. So this is like a indices in front of you. So j plus 1 comes out to be 4. आपने नोट किया है? J plus 1 is 4, j plus 1 is 4 and right is 3. A right over here is like 3. So आपका left और right ये cross हो रहा है. I hope you want that j plus 1 to right. A j plus 1 is nothing but 4 to 3 आप लोग कह रहे हो, और अगर आप लोग कह रहे हो 4 to 3 ऐसा कोई partition हो ही नहीं सकता. I'm saying that in the right side partition, left is going to become 4 and right is going to become 3. Right is going to become 3, so which is an invalid partition in itself. Invalid partition in itself, so that is terminating condition. But still, I'm very sure you are able to see that your array is still sorted. 1 2 3 4, so the elements are in a sorted position. Okay, that is good. By the way, लेकिन left partition sort हो गया. What about right partition? Or to sort the right partition, what is to be done? You continue further. A right partition, what is to be done? If we have got this, and what is next job? You consider this as a pivot, and you continue the story. You want to find out a number greater than pivot. I found a number greater than pivot. You want to find out a number less than pivot. I found a number less than pivot. And then I want to swap these two. 6 comes over here, 8 goes over there, continue further. Again, I want to find out number greater than pivot. Yes, I found a number greater than pivot. I want to find a number less than pivot. Again, I found a number less than pivot. Oh, that is good. What is next job to be done? What is next job to be done? And they crossed each other. So you swap this element with the pivot. Okay, 6 z element with the pivot, you have swapped that. Okay, that is done. And if you have done that, apply quick sort to the left partition. When you apply quick sort to the left partition, applying quick sort to the left partition contains only one element, that is 6. And where I understand that left is equal to right, so there is nothing, a single element, तो इसको sort करने का कोई मतलब नहीं है. You continue further and you want to apply it to now the right partition. Okay, the right partition is 8 and 9. All right, this is 8 and this is like a 9. Okay, that is good. Then you consider this element as a pivot and try to find out a number greater than pivot. I found a number greater than pivot. I want to find out number less than or equal to pivot. ए जैसे शुरुआत करो, लेस देन तो नहीं मिला बट इक्वल टू मिल गया है. ए लेस देन तो नहीं मिला लेकिन इक्वल टू मिल गया है. आई फाउंड अ नंबर लेस देन और इक्वल टू pivot. Again you found a number less than or equal to pivot. What is happening in this case? Again the jth element is swapped with itself, so 8 element is swapped with itself, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Now you apply to the left partition. आपका लेफ्ट पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक है? J से लेके आपका लेफ्ट पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक है? लेफ्ट पार्टीशन is from J to, sorry, left to J minus 1, left to J minus 1, something like this. 5 6 7 8, this is 5
6, it is 7 and 8. So j minus 1 comes out to be 6. A j minus 1 comes out to be 6 and left is nothing but 7. So यहाँ पर in this particular case you will find that जो नया partition आएगा उसका left बन जाएगा 6, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट 2j-1, सो लेफ्ट बन जाएगा 7 और उसका राइट बन जाएगा काइंड ऑफ अ 6j-1, विच इज समवॉट अगेन इनवैलिड पार्टीशन। तो यहां पर करने लायक कुछ नहीं है। नाउ यू गो टू द राइट पार्टीशन। राइट पार्टीशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है एंड दैट एलिमेंट इज नथिंग बट 9। दैट एलिमेंट इज नथिंग बट 9 एंड इफ दिस इज द एलिमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, this is the element that you are talking about, I'm able to see that in this case left is equal to right, so nothing much I need to do with this as well. This is done and I'm saying that मैंने आपको till the lowest level बताया कि क्विक सॉर्ट कैसे वर्क होता है। सो हर एक स्टेप वाइज हम लोगों ने देखा हुआ है। वापस से दिस काइंड ऑफ रिकर्शन ट्री। सो योर फर्स्ट डिवीजन इज लाइक दिस, योर सेकंड डिवीजन इज लाइक दिस, योर थर्ड डिवीजन इज लाइक दिस, योर फोर्थ डिवीजन इज लाइक दिस एंड योर फिफ्थ डिवीजन इज लाइक दिस। सो दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज। ये आपका रिकर्शन ट्री मैंने आपको दिखाया। अगर आपने ठीक से नोट किया है, अगर आपने ठीक से नोट किया है एंड नाउ इट डिपेंड्स मोर और लेस अप टू योर लक। लक मतलब आपका पिवट एलिमेंट कहां पर आता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट रहेंगे, राइट में कितने एलिमेंट रहेंगे। लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द अर्लियर एग्जांपल, यू सी दैट अर्लियर एग्जांपल, अगर आपने नोट किया इन अर्लियर एग्जांपल राइट वाले पार्टीशन में एक भी नहीं गया, जितने सारे एलिमेंट गए उतने सारे एलिमेंट उसके लेफ्ट पार्टीशन में ही गए। हैव यू नोटेड दैट? ओ लेफ्ट पार्टीशन में ही गए। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपका जो अगला सॉर्ट होगा, ए सीट केयरफुली, जो आपका अगला पार्टीशनिंग होगा, सो यू नीड टू वर्क on an array of 1 3 and 2 as you are working with the array of 1 3 and 2, as you are working with the array of 1 3 and 2, again you try to apply, you try to make this one। आप लोगों ने क्या किया, इसको एज ए पिवट कर लिया एंड देन यू आर अप्लाइंग व्हाट इज दैट, यू फाइंड अ नंबर ग्रेटर देन पिवट। अगेन आपको कोई भी ग्रेटर देन पिवट नहीं मिल रहा है, यू अंडरस्टैंड दैट, और लेस देन और इक्वल टू पिवट, सॉरी एक माय मिस्टेक, you find a number greater than pivot and you want to find a number less than or equal to pivot, less than or equal to pivot, again I find that this element itself is less than or equal to pivot, so that element is swapped with itself, actually it is swapped with itself। what is next job to be done? The next job to be done is that apply quick sort to the left partition, which is invalid partition, apply quick sort to the right partition, and to apply quick sort to the right partition, again take a look at this। now you need to again consider the array of two elements। please note पहले आपका array of कितना था, 4 elements था, बाद में वो array of 3 elements के ऊपर आ गया and again you are trying to apply something similar logic, again you are trying to consider one of the element as pivot element, you try to find out a number again greater than pivot, oh I do not find anything greater than pivot, you find a number less than pivot, I found a number less than pivot, and what is the next job to be done? Or next job to be done, you want to swap z element with the pivot, you swap z element with the pivot, you swap z element to the pivot, okay that is pretty good। and the last thing that I understand over here is that इसका राइट साइड का पार्टीशन वैसे भी इनवैलिड है और इसके लेफ्ट साइड के पार्टीशन में देयर इज अ सिंगल एलिमेंट एंड दैट सिंगल एलिमेंट that you need to handle, single element that you need to handle, which is again a kind of a terminating condition। तो this is done। आप लोगों ने नोट किया है with the array of 4 elements आपने लिटरली तीन बार रिकर्सिव कॉल किया। अगर ऐसे ही अगर आपका एरे ऐसे होता 10 9 8 7 10 का एरे होता एंड 10 to 1 होता तो शायद आपको 9 बार कॉल करना पड़ता। बट दिस इज अनलकी केस जहां पर आपका एरे या तो पूरा सॉर्टेड है या तो पूरा अनसॉर्टेड है, मतलब अनसॉर्टेड इन द सेंस या तो पूरा डिसेंडिंग या तो पूरा असेंडिंग सॉर्टेड है। एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ पार्टीशंस और नंबर ऑफ passes that you are able to see are nothing but 3 passes, in turn it is kind of n minus 1 passes you are able to see। However, in this assignment यहाँ पर अच्छी बात ये थी, एग्जाम्पल मैंने लेते वक्त ऐसे लिया था कि हर बार ये पिवट कहीं ना कहीं पर तो बीच में आता रहे, कहीं ना कहीं पर तो बीच में आता रहे, एंड विद दैट आपके जो नंबर ऑफ पासेस है दे आर लाइक रिड्यूस्ड। आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट क्विक सॉर्ट तब ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्विक सॉर्ट तब ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है जब आपको एवरी टाइम
you get the pivot element in between. Every time you get the pivot element in between, जितनी बार आपको pivot element corner में मिलता रहेगा, जो कि ये वाला केस था, I would say that it is highly inefficient. इट इज हाईली अनएफिशिएंट. जितनी बार आपको पिवोट एलिमेंट सेंटर में आता जाएगा, मतलब आफ्टर वन पास, सो यू फाइंड दैट इट इज इक्वल इक्वल डिवीजन होते जाएंगे. और जितनी बार इक्वल इक्वल डिवीजन होता है, सो यू विल फाइंड दैट द क्विक सॉर्ट इज एट इट्स बेस्ट केस. एंड देन इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू द मर्ज सॉर्ट, इजंट इट? ए मर्ज सॉर्ट में आप नसीब के ऊपर कुछ नहीं छोड़ रहे हो. मर्ज सॉर्ट में आप लोग सीधा सीधा कह रहे हो मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट बाई टू. आर यू देयर? mid is equal to left plus right by 2. So merge sort में it is always division by 2 हो रहा है. लेकिन क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं हो रहा है. क्विक सॉर्ट में हम लोग बीच में से पोजीशन ढूंढ रहे हैं और फिर अचानक से उसको ये कर रहे हैं. करेक्ट? तो वहां पर थोड़ा सा वो लक फैक्टर इन्वॉल्व है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जो क्विक सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, जो कुछ भी मैंने मर्ज सॉर्ट का एक्सप्लेनेशन किया था, इन अ बेस्ट केस I say that quick sort in a base case is like merge sort, and in the like merge sort, so time complexity will again continue to be O of n log n, O of n log n. But in a worst case, a worst case में क्या हो रहा है? वर्स्ट केस में क्या हो रहा है? ये जो आपका लूप है वो लॉग इन टाइम रिपीट नहीं हो रहा है. लॉग इन कब होता है? जब आप लोगों का रिकर्शन ट्री का हाइट लॉगरिथमिक जा रहा है. अब यहाँ पर आपका रिकर्शन ट्री का हाइट लॉगरिथमिक नहीं जा रहा है, इट इज सिंपली गोइंग काइंड ऑफ n माइनस वन. अगर आपका रिकर्शन ट्री का हाइट अगर सीधा सीधा n माइनस वन जा रहा है, n माइनस वन जा रहा है, तो ऑब्वियसली इन वर्स्ट केस, in a worst case it will be O of n into n minus 1, and it is n into n minus 1. You know that n into n minus 1, n square minus n is to be ignored. You can say that the time complexity comes out to be O of n square. Time complexity comes out to be O n square. जो लोग लेट आए थे वो लोग बाद में वापस से मर्ज सॉर्ट का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था उसका वीडियो वापस से देखना. मैंने वही से लेक्चर शुरू किया था, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, प्लीज गो बैक एंड टेक अ लुक एट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जो मैंने स्टार्टिंग में मर्ज सॉर्ट पढ़ाया था वो आप लोग चेक कर लो. और यहाँ पर ये तो मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आपका एरे या तो पूरा सॉर्टेड जब होता है, जब कभी आपका एरे फुल्ली सॉर्टेड होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो एक्चुअल हर बार एक पार्टीशन में एक एक एलिमेंट सिर्फ कम होता जाता है. एंड दैट्स व्हाई द एक्चुअल नंबर ऑफ पासेस दैट यू फेस इज अराउंड n minus 1 passes. तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई एम सिंपली सेइंग दैट दैट कम्स आउट टू बी n स्क्वायर, क्योंकि वहां पर log n तो नहीं होता है, वहां पर आपका हाइट काइंड ऑफ n minus 1 हो जाता है, दैट पार्ट. एंड दैट इज क्विक सॉर्ट. तो सर ये पिवट हमेशा बीच में आए, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका कोई ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है. टेक अ लुक एट दिस. द क्विक सॉर्ट पिवट एलिमेंट कैन बी फर्स्ट एलिमेंट और इट कुड बी अ लास्ट एलिमेंट. जो अभी हम लोगों ने किया, मैंने आपको फर्स्ट एलिमेंट से दिखाया. कुछ लोग लास्ट एलिमेंट एज ए पिवट लेते हैं और वैसे करते हैं. कुछ लोग कहते हैं काम करते हैं, वी विल गो ऑन अ रैंडम बेसिस and we will select the random number as a pivot. We can take like a random number of a pivot. But ideally अगर आपको बीच वाला एलिमेंट अगर हमेशा बीच में लाना है, then you can always say that you can find out a median of array. What is median? What is median of the array? मीडियन वो होता है कि एरे को सॉर्ट करो और सॉर्ट करने के बाद में जो एलिमेंट बीच में आएगा उसको कहा जाएगा मीडियन. आई सेड एरे को सॉर्ट करो और सॉर्टेड एरे का जो भी बीच वाला एलिमेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज ए मीडियन. दैट इज कॉल्ड एज ए मीडियन. तो वैसे टू बी फ्रैंक इन दिस पर्टिकुलर एरे 5 वाज ऑलमोस्ट अ मीडियन, बट वो लकीली लेफ्ट में था तो हमारा अच्छे से चल गया. बट यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग लेफ्ट राइट के ऊपर मत जाओ, आप लोग हर बार मीडियन ढूंढो और ये करो. लेकिन इन माय ओपिनियन अगर आप लोग हर बार मीडियन ढूंढोगे तो मीडियन ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, उसका क्या? आई होप यू गॉट द पॉइंट. You got the point. So that is again to be counted. So we just done, हम लोगों ने जो भी असाइनमेंट किया था, हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ये वाला फॉलो किया था. We will take the first element as a pivot. So median मैं कहीं पर आपके लिए लिख के रखता हूँ. What is median? I say that middle element in sorted array. और जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसका जो कुछ भी क्या कहते हैं काइंड ऑफ कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये मैंने एक वेबसाइट से लेते हैं medium.com. वहां पर एक क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक ब्लॉग है.
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ब्लॉग है, वो मैंने पढ़ा था, आई फाउंड इट गुड, तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया था। बट अगेन इट इज प्योरली मैथमेटिकल। जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, आई गेस दैट वाज लाइक अ मोर इजी टू अंडरस्टैंड।